ओके, हेडिंग डालो, आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, तो राइट हियर, दिस इज Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, लास्ट टाइम में हम लोग ने क्या पढ़ा था? आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसको बोलते थे यूलर मॉडिफाइड मेथड, राइट? ओके, तो इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 2 k2 2 k3 प्लस k4। इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ चार वैल्यूज हम निकालते हैं। ठीक, k1 k2 k3 k4। ओके, वेयर k1 इज इक्वल टू, राइट हियर, वेयर k1 इज इक्वल टू h f x कॉमा y। राइट, दिस इज k1, दिस इज k2 k3 k4। So right here, write all these value. Y is equal to y0 plus h f k1 2 k2 2 k3 plus k4। Okay, where k1 is equal to what? H f x comma y, k2, तो k2 डिपेंड है k1 पे, k3 डिपेंड है k2 पे, एंड k4 डिपेंड है k3 पे, राइट? So without k3 you cannot calculate k4, because k4 is dependent on k3, where k3 is dependent on k2 and k2 is dependent on k1, right? So always calculate k1 first, then k2, k3 and k4, and put all these values here and multiply with h, with initial value of y, we will get the answer. Okay, ये नोट कर लो। बहुत कर लिया। ओके, सी दिस क्वेश्चन, find the approximate solution of the initial value problem। इनिशियल कंडीशन दिया है, कौन सा मेथड यूज करना है? आर के सेकेंड ऑर्डर एंड फोर्थ। डी एक्स बाई डी टी 1 plus x/t, where t goes from 1 to 3, x at 1 is equal to 1। स्टेप साइज कितना दिया है? h का वैल्यू 1 दिया है, राइट? तो हम लोग इसको कौन सा मेथड से करेंगे? आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हम लोग नहीं करेंगे, राइट? अब सेकंड ऑर्डर नहीं करेंगे, फोर्थ ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हम लोग पहले कर चुके हैं ना।
Euler modified method. 1/2 यस, हम लोग आज करते हैं आर के मेथड ऑफ फोर्थ fourth ऑर्डर। order. तो फार्मूला क्या होता है? यहाँ तुम लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू Well, एक्स जीरो, बिकॉज in the place of y there is x, and in the place of x there is t, right? 1/6 k1 2 k2 2 k3 प्लस k4। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, वहाँ 1/6 भी था, राइट? um, यस। तो फर्स्ट वी फाइंड k1। k1 इज इक्वल टू क्या है? H L times F X यस, Y power A करेक्ट। over X. करेक्ट। k1 इज इक्वल टू एच एफ टी कॉमा एक्स, राइट? Mhm. तो एच इज व्हाट? 1। एफ टी इज व्हाट? 1 is between 1 and 3. यस, दिस इज टी एक्चुअली। ओके, एंड दिस इज एक्स at 1 comma 1, right? So 1 f1 x is 1, y is 1, so you are getting 2, right? Yeah. K2 is what? H f x, 1 f t is what? 1 plus h is 1/2, x is what? 1 plus k1 is 2/2, right? So 1 plus x is what? 2, and t is 3/2, 2.66, right? 667 k3, h is 1, t is what? 1 plus h/2, x is 1 plus k2 is what? 2.667 divided by 2. 2.335. 1.5, right? 2.556. This is K3. Okay. Okay.
Now we will find K4. Is the fourth range but the fourth method more precise? Is that good? Yes. Then there's probably like an eighth method on the 16th method. No, 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 ऐसा नहीं है. Okay. This is K4, right? X0 is 1, right? 1 by 6. K1 is K1 is 2. 2, K2 is 2.667. 5, 5, 5. That's 2.7778. Okay. Right. This is Y1. And similarly, we will calculate Y2 and Y3. Why Y3? Because this Y1 is value of, this is what? This is at point, Is that when we do the first iteration? yes. Okay. And Y1 was 1. तो 1 पे 1 था ना, 2 पे ये वैल्यू आ रहा है. हमको क्या फाइंड करना है? 1 से 3 दिया था ना, तो स्टेप साइज क्या दिया था? 1. इसका मतलब टी का वैल्यू 1 पे, टी का वैल्यू 2 पे और टी का वैल्यू 3 पे फाइंड करना है, राइट? ये किस पे है? 1 पे है. अब हम किस पे फाइंड करेंगे? 2 पे. तो फॉर सेकेंड इटरेशन, ये अब हम टी के जगह 2 रखेंगे और एक्स के जगह 3.3 रखेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, राइट? वेयर k1 इज व्हाट? h at x t comma x, where h is 1. Here t is what? T is 2, right? X is 3.3794. 1 plus t by x, right? तो हम यहाँ से k1 फाइंड करेंगे.
K2, K3 एंड K4। तो H2 का वैल्यू क्या रहेगा? X1 प्लस ये, समझ गया ना? हाँ। तो कैलकुलेट एंड टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H2।